crisis, this is a very critical and crucial time. मुझे प्रसन्नता है कि आप सब साथ हैं और यही मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि मैसेज ऑफ टुगेदरनेस, दैट हाउ वी आर टुगेदर इन द टाइम ऑफ दिस क्राइसिस, नंबर 1. नंबर 2, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, ऊर्जावान कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और जैसे ही इस समस्या का पता लगा उसके समाधान के लिए तुरंत ही वे आगे आए और पूरे देश को दिशा निर्देशन दिया और लॉकडाउन किया. उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं. और तीसरी बात, इस देश के सभी फ्रंटलाइनर, चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, स्वच्छता कर्मी, सभी लोग सामने आए और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन की जान की बाजी लगाकर रात दिन अपने परिवारों की भी चिंता छोड़कर लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी सेवा को भी हम लोग नमन करते हैं. because they also need encouragement right this time. जी धन्यवाद पूज्य स्वामी जी. जी धन्यवाद पूज्य. जो और जी पूज्य स्वामी जी, जस्ट सबसे सुनने का अवसर मिले. मौलाना साहब आपकी साउंड म्यूट पे है, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं. किया गया है कि अपनी जान और अपने अजीजों की जान बचाना तुम्हारे ऊपर फर्ज है. कि हमारी people still do not take this COVID-19 or coronavirus seriously. I would like to tell for them, this coronavirus is a deadly disease. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं होगा और ये for all people only, ऐसे करके अभी भी बहुत लोग हैं वो सीरियसली नहीं लेके इधर उधर घूम रहा है. The message is only for those people that please take it seriously. ये जो disease है, calamities है, it is for all. ये सबके लिए affect करता है. इसमें कोई किसी ग्रुप के लिए नहीं है. It is not only for Hindus or Buddhists or Christians or for old people और ऐसे कुछ ऐसे नहीं है. For every age group people, for every person, as long as we are human being, this COVID-19 is getting affected for all. इसीलिए अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसका वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, how it gets spread, how can we defeat coronavirus. तो इसीलिए जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मैं इनको बोलना चाहता हूँ काइंडली टेक इट सीरियसली. और जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेडिंग होता है, इसको रुकने के लिए एक ही रास्ता जो है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स और जो एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड बोल रहे हैं कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और घर से मत निकलना, बाहर नहीं निकलना. तो ये सीरियसली हमें ऑब्जर्व करना जरूरी है. तो मैं वही बोलना चाहता हूँ. बिल्कुल, उसका पालन करना जरूरी है. इसे सीरियसली और सिंसियरली पालन करना बहुत जरूरी है. इसके साथ फादर पॉल, अगर आप अपने मार्गदर्शन देना चाहे तो बड़ी कृपा होगी, या आप से भी हम सब सुनना चाहेंगे कि आपका क्या मैसेज होगा इस समय. फादर पॉल, आप म्यूट पे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर दें. Thank you. Good morning, everyone. My message, as everyone says today, stay at home. Keep social distancing. Social distancing is the best medicine. Automatic mute हो जाता है. Social medicine is the best. Is the best. एक सेकंड बस. मौलाना साहब, आपने आपको म्यूट पे कर देंगे तो फिर आप चर्चा कर सकते हैं. फिर फादर पॉल को हम सुन सकते हैं. एक सेकंड, है ना? जी बस. थैंक यू फादर पॉल. My message is very simple, as everybody says that stay at home,
keep social distancing. Social distancing is the best medicine to address this pandemic. Comply to all the advisories given by the government authorities and go with a principle of do no harm to anybody. We do believe that we are part of one human family, Vasudhaiva Kudumbagam. Let us pray and strive for the happiness of everyone in the planet and also in our nation. Loga samasta sukhino bhavantu. We are all inspired by our faith. Faith without action is dead. Motivated by our faith, we are sharing our life, our mission with the suffering world. God lives not in temples, churches, mosques alone, but we see God in the lives of the people who are sick, who are ailing in this context with corona, and with people on the streets with the suffering. And our service to the humanity is service to God. Manava Seva is Madhava Seva. जी बिल्कुल. Manav Seva is Madhav Seva and faith in action. Thank you so much, Father, for your message. And we will ask Sadhvi Bhagwati Saraswati ji if you can share. आज इसी कोरोना वायरस के टाइम में एक्चुअली अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए, अपने परिवार को ध्यान रखने के लिए, अपने समाज को ध्यान रखने के लिए, अपना देश को ध्यान रखने के लिए is very simple. We've been given the answers. Stay at home. घर में रहो. Distance बना के रहो. अगर by chance कोई emergency की वजह से घर से निकलना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सकते हैं घर में रहो. कोई ऐसे इमरजेंसी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बाहर जाना है. घर में रहो और अपने सारे हैंड वॉश की टीचिंग्स, अपने एल्बो में काशी, स्नीजिंग, ये सब चीज हम लोग सीख रहे, सुन रहे काफी हफ्तों से. यदि हम इसकी सारे चीज फॉलो करेंगे, that's the simple way. This is not rocket science. We know how to protect ourselves. We know how to protect our families and communities. At this time, though, it's essential to realize कि सभी की सेवा के लिए हमें खुद घर में बैठना है. Usually हमको लगता है कि सेवा करने के लिए बाहर जाना है, लेकिन now the very best सेवा we can do अपने लिए, अपनों के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा विश्व के लिए is घर में रहो. लेकिन last point is घर में बैठते बैठते ऐसे नहीं है कि एक नया बीमारी शुरू हो जाए. ऐसे नहीं है कि घर में बैठते बैठते डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाए, ड्रग यूज, अल्कोहल यूज शुरू हो जाए. तो उसको खूब भी ध्यान रखना है कि वो बीमारी that should not start. घर में भी स्वस्थ रखना है, सेफ रखना है. जी. Taking care of ourselves and our families. जी बिल्कुल. घर में रहकर के स्वस्थ रहना है, नई बीमारी ना शुरू हुए उसका भी ध्यान रखना है, और घर पे ही रहना है. यही हमारी सबसे बड़ी सेवा हो सकती है देश को. थैंक यू सो मच साध्वी जी फॉर शेयरिंग योर मैसेजेस. डॉक्टर राजवंत सिंह जी, अगर आप जथेदार जी के तरफ से, अकाल तखत की तरफ से, इको सिख की तरफ से आप अपना संदेश दे सकते हैं कि कैसे पूरे देश और दुनिया को इस समय एहतियात बरतना है. सिंह साहब, आपकी माइक अनम्यूट पे कर दीजिए. अभी अनम्यूट नहीं हुआ, दोबारा से म्यूट हो गया है. Am I okay now?
Yes, perfect. All right. Thank you so much for giving me the opportunity to connect with you all. I'm here from Washington, D.C. And America is the epicenter of this pandemic. We have close to 5,000 people have already died in United States, और 2.25 लाख लोग इस वक्त इस बीमारी के साथ पॉजिटिव टेस्ट में उनका हुआ है, और इसका जो बहुत ज्यादा भयंकर रूप हम हिंदुस्तान में देख सकेंगे, इंडिया में देख सकेंगे, अगर हम लोगों ने सबने जो एक्शन जो हमें चाहिए लेना अगर ना लिया। सबसे जो अभी सब जो एस्टीम्ड पर्सनैलिटीज का जो मैसेज यही है कि हम सब इस बात का ध्यान रखें कि मेरे कारण किसी और का तो नुकसान तो नहीं हो रहा। यही अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, और आज हमारे सिख कम्युनिटी के लिए और हिंदुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही शोक भरा दिन है, क्योंकि we just lost भाई निर्मल सिंह खालसा, one of the singers जो कीर्तन करते थे गोल्डन टेम्पल में, हरमंदिर साहब में, और उनका कीर्तन सारी दुनिया में लोग एडमायर करते थे। उनका कीर्तन सुन के मन को शांति आती थी। वो कोरोना वायरस के कारण उनकी आज मौत हो गई है अमृतसर में। It is a very, very sad day for this entire Sikh community. He was a Padam Shri, and again, it's one lesson that we all need to learn, that coronavirus can touch anybody, regardless of your social status, regardless of who you are, which religion you belong to. We all need to be careful, and we all need to make sure that we follow the guidelines. और हम सब ये देखें कि हम मेरी क्या सेवा हो सकती है। और गुरु नानक देव जी महाराज ने और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हमारे धर्म में कहा है कि सब किछ घर में बाहर नहीं, हर मंदिर ए शरीर है। This body is the temple of God, and taking care of your own body and making sure that you don't cause harm to others, that will be the greatest way to serve God and serve humanity. So this is my message on behalf of the Sikh community, but at the same time from Jathedar Harpreet Singh, that we all need to follow. And one thing which I would really like to say, that this disease is affecting the greatest or the most powerful nation in the planet, America. Just imagine if the medical system of this country can be failing, what it will happen, what will be the result if it continues in the countries where we don't have the medical system to handle the disaster. So it is very, very important that we all follow the instructions. Thank you. नन्नी जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। जी अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मैं अभी ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ। जी। अब हम दूसरे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। बेसिक सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम जब इस समय हम देख रहे हैं कि कई सारी संस्थाएं, कई सारे धार्मिक संस्थाएं इतनी सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आपसे सुनने के लिए कि कैसे आपकी संस्थाएं, आपके माध्यम से क्या क्या सेवा कार्य हो रहे हैं इस समय। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूज्य स्वामी जी महाराज, आप अपनी पहले क्वेश्चन में भी एक तीसरा पॉइंट था जो रह गया था, अगर आप उसे शेयर कर सकते हैं, और इस समय क्या क्या सेवा कार्य परमात्मा निकेतन के माध्यम से हो रहा है वो भी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे ही पता लगा
कि ये समस्या आ गई है और समस्या गंभीर है, तो मुझे लगा इस समय सबसे पहले यदि कुछ हो सकता है वो इस समय इस सेवा में समर्पित कर दें। यही यज्ञ है। दूसरी बात, जो लोग सड़कों पर, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ बंद होने के कारण कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो लोग घर में हैं वो तो सेफ हो गए, जो लोग कहीं और हैं, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं या अन्य हैं, उन सबके भोजन की व्यवस्था। तीसरी बात, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, वो भी हमारे ही अंग हैं, हम एक हैं, एक परिवार हैं, उन सब के लिए भी राशन लोगों के लिए चाहिए, तो इनके लिए भी चारा चाहिए, भूसा चाहिए, दाना चाहिए, तो उनके लिए वो व्यवस्था। फिर है पशु पक्षियों के लिए उनकी व्यवस्था। इस तरह की दूसरा है, एक यज्ञ शुरू किया जो कि पूरे विश्व की शांति के लिए, एक पाठ शुरू किया पूरे विश्व की शांति के लिए, और साथ में सबको इंडिविजुअली बताया कि तुम अपने घर पर बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी आप लोग बैठकर अपने अपने कमरे में ध्यान करें। इतने देशों के लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनको भी यही कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपने अपने कमरे में ध्यान करें। इस समय यही सबसे बड़ी सेवा होगी। अंतिम बात, मुझे लगता है कि अभी सबने कहा घर पे रहो, मुझे लगता है घर पे रहो, घर वालों के साथ रहो, घर वाली के साथ रहो, लेकिन इस तरह से रहो कि और प्यार बढ़े, थोड़ा और धीरे बोलो, थोड़ा और प्यार से बोलो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुझे सुनने को मिला कुछ देशों में वायलेंस बढ़ गई है, होम वायलेंस बढ़ गई है 50%, कहीं 40%। मुझे लगता है ये बात, ये समय लड़ने का नहीं है, ये समय साथ साथ मिलकर कुछ करने का है। ये अवसाद का समय नहीं है, डिप्रेशन का समय नहीं है, पैनिक होने का समय नहीं है, बल्कि पेशेंस होकर आप पेशेंट ना बनाएं खुद को। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, ऐसे समय में हम योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको टेंशन भी नहीं होगा, उससे भी मुक्ति मिलेगी। चौथी बात जो बहुत जरूरी है इस समय ध्यान देने की, वो है लोग तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे आ रही हैं, कुछ लोग भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें जो भारत सरकार का स्वास्थ्य और कल्याण, परिवार कल्याण मंत्रालय आपको एडवाइजरीज दे रहा है, यूनिसेफ ने, WHO ने, WSSCC ने, ना जाने कितनों ने इस बारे में जो हमको अपनी सावधानी पूर्वक सारे निर्देश दिए हैं, हम उनका ही पालन करें। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अलग तो रहें लेकिन अलग थलग ना रहें, दिल से एक हो जाएं, शरीरों से भले दूरी बनी रहे, इस समय दूरी ही दवा है, दूरी ही दवाई है, ये बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। दूरी ही दवा है, और इस समय हम कैसे एक दूसरे से दूर रह के भी एक दूसरे से पास रह सकते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम कैसे अपना इमोशनल डिस्टेंसिंग ब्रिज कर सकते हैं, और धर्म उसके लिए कितना बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है। उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि Father Paul, if you can share what Caritas India is doing to address at this time of crisis. What is the seva that is happening through Caritas India? Father Paul. Thank you. Caritas India, the social work humanitarian face of Catholic Church in the country, has come up with quite a lot of measures to address this humanitarian crisis. As all of us know,
this COVID-19 pandemic has given rise to a humanitarian crisis as well. While we ensure that the social distancing measures are being strictly adhered to, taking enough precautions and protective measures, we are reaching out to millions of population, the poor people, with a kind of food materials, cooked food, and also other food materials, especially to the migrant community, to the unorganized sector, people living in the slums, domestic workers, because we do believe that they need to be protected, they need to be sustained. We do see this problem that they have no means of subsistence at this period of lockdown time. They have no employment, they have no wages. So it is our responsibility to reach them out, to protect them, feed them, and shelter them. We have opened up our schools and thousands of volunteers taking care of these people with enough protective measures is one of the important service that Catholic Church is doing at this point of time. And as our Puja Swamiji Chidananda Saraswati said, there is a problem of emotional outbreaks because of the kind of isolation in the homes, wherein we have put up systems in all the states, mapping all our human resource who are well versed in psychological counseling, extending psychosocial support to the people who are in need of it, which is the necessity of the time. These are some of the important proactive measures the Church has taken at this period of time. Thank you so much, Father Paul. Serving the migrant community, the psychosocial support that the church is providing, for sharing all of those beautiful work that Caritas India is doing. If I can request Venerable Dr. Dhammapiyaji to share what, through the International Buddhist Confederation, the work, the seva that is going on. Yes. This IBC, or International Buddhist Confederation, and its associate institutions and organizations have started the campaign, awareness campaign in the first place, making people aware about the deadly disease and importance to keep the social distancing and be at home. Number two, we also have started the prayer and chanting programs. Almost all the places where the Buddhist monks are there, the one important chanting or sutra that during Buddha's lifetime, this kind of calamities took place. It's in Vaisali. So Buddha has given a sutra, Patan Sutra. So it is being chanted, and this positive energy is being spread out after chanting for the early recovery of this from this COVID-19. And social service aspect, all our outlets or the institutions and organizations, they are doing at their own level this providing rice, even sometimes financial help and other support to those who do not have enough to feed. So these kind of things are being served
now by Buddhist Thank you. organization. Beautiful, beautiful. Thank you so much, Venerable Dr. Dhammapiyaji. Prayer, positive chanting, precautions, and beautiful services happening through the International Buddhist Confederation under your leadership. Thank you so much for sharing that beautiful work. If we can request from Dr. Rajwant Singh ji, what the Gurudwara is doing, what Akal Takht is doing, and what EcoSikh is doing at this time. Akal Takht has already issued a directive to the Sikh community throughout the world to really offer Gurdwaras as a refuge or offer for medical purposes. So many Gurdwaras are opening up for becoming hospital in Delhi and in certain other parts of India, and even in United States. So और उसके अलावा हम लोगों ने जो सिखों की तरफ से लंगर की सेवा देखा होगा कि दिल्ली में काफी जगहों पर लोग जो फंसे हुए थे, ट्रैवलर्स जो खास करके लेबर क्लास जिनको दे वर कंप्लीटली ट्रैप्ड, उनके लिए ट्रेन्स भी बंद हो गई, बसेस भी बंद हो गई, उनके लिए लंगर पिछले 6-7 दिनों से लगातार लंगर की सेवा चल रही है सिखों की तरफ से। और पंजाब में भी जो खास कर में जो रूरल एरियाज में लोग वहाँ पे सेवा गवर्नमेंट की सर्विसेज पहुँच नहीं पा रही, वहाँ पे काफी volunteer organizations like Alliance for Sikh Organizations, they have gone to serve these communities and families to support them. So there is a renewed sense of this new concept of langar. The langar is usually when people come in the Gurdwara and eat together and sit together. But now the langar is being distributed on the streets and in the slums, and especially in the areas where people have difficulty really making to their ends meet. So ये हम सब के लिए opportunity है, जो गुरु नानक ने कहा है कि गरीब दा मुंह गुरु की गोलक. So that's what the Sikh community has been trying to implement, and also we are trying to make sure that we also make sure that environment is being not trampled upon while we are trying to save ourselves from one disaster, because environmental consciousness and climate change it's all things are connected. So we are trying to educate through our social media, and we have started Kirtan from many Gurdwaras, Kirtan online, virtual divan, virtual gathering, ताकि लोगों को लिए spiritual जो उनकी needs है वो भी पूरी होती रहें और उनके मन में भावना बनी रहे कि हम सब एक हैं और हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस वक्त. Thank you so much, Dr. Rajwantji, for sharing what a beautiful example that the Gurudwaras are serving, that Sri Akal Takht is serving, and that EcoSikh is serving, along with langars, all of the beautiful work that is happening to protect the environment as well. Thank you so much for sharing that. If I can request Sadhvi ji to add what is happening through the Global Interfaith Wash Alliance, through Paramath Niketan, through Divine Shakti Foundation at this time. Sure. Well, as Puja Swamiji shared so beautifully, we are actively engaged, as always, in doing whatever we can for whatever is needed. So these days, on the logistic level, of course, as he shared, feeding so many people, feeding the animals, giving our hospital area for the treatment and the quarantine of corona patients, and so many other things. But we're also really deeply committed to serving on all of the levels that people exist. And so, yes, when they're hungry, they need to be fed. When there is an illness, they need the medical care. But what we also know is that
how we feel, our emotional state, our psychological state, our thoughts, our feelings, our spiritual state, not only changes how we feel emotionally, but it also has a massive impact on our immune system. And so from here at Paramarth Niketan, we've also been offering a full day of programs and activities online. We can no longer come together with the physical community, but we're now coming together with the online community. And it's beautiful because, of course, as Puja Swamiji always says, community means come-unity. And so we're really uniting with people, offering yoga, offering chanting, offering prayers, meditation, satsang, Ganga Aarti, pre-recorded, of course, Aarti, but all of the full day of programs for health in the body, peace in the mind, and a very deep upliftment, inspiration, awakening in the heart and the soul on a logistic level, because it's good for the immune system, decreases stress, boosts our immunity, but on a much deeper level, because as we emerge from the Corona challenge, we don't want to emerge only as alive and physically healthy. Ideally, we should emerge as more awake, more inspired, more connected, more united. And so we are very engaged all day long in providing our international online community with so many different programs and activities and offerings all day long to keep them healthy, connected, whole, well, and uplifted. Very well said. We can communicate with each other. Yes, yes, yes. Of course, because we're seeing this, of course, as not just a disease or an illness, but actually as an opportunity to really come together and to, as Puja Swamiji said earlier, even though physically we may be separated, in our hearts and in our minds and in our energy, we are one and connected. And so using the great power of technology to foster and deepen that oneness. Yeah, in every hymn in the 6 scriptures, is one word comes to the how, which means says pause, take a pause. So this is really a moment for all of us to really pause and see where we are going and where we are coming from. This is really an opportunity. I agree with you. Apologies, I have now rejoined. Hopefully everybody can hear me. Yes, we can. Thank you so much for all of your patience. If I can request now, Maulana Sahab, Jamiatul Mahind in times of disaster and times of crisis always comes forward and does a plethora of activities. If you can share all of the work that is happening through Jamiatul Mahind, we would love to hear from you. जी बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि खाना पका के पहुंचाने का और राशन का देने का तकरीबन 1 लाख फैमिलीज को हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो वर्कर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने स्वामी जी के साथ बात कर रहा था मैं 2 दिन से, और पीपीई तैयार कराने का काम शुरू किया है उन लोगों के लिए जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, हमारे रियल हीरोज हैं, जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं। तो एक कोशिश चल रही है और स्वामी जी ने कहा है कि बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर इस काम को करेंगे। तीसरा एक और है, अगर सभी लोग मिलकर एक साथ कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं ऑफर करना चाहता हूँ
जो स्पेन वालों ने किया है, उन्होंने ये किया है कि रोजाना हेल्थ वर्कर्स को कोई ना कोई गिफ्ट भेजते हैं सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से। उनको अच्छा सा खूबसूरत पैक किया हुआ गिफ्ट पहुंचता है और उस गिफ्ट में कभी सस्ती चीज होती है, कभी मीडियम क्वालिटी की होती है, कभी महंगी चीज भी होती है। तो हमें क्योंकि अपने हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो मैं सबको ये इनवाइट करना चाहता हूँ कि हम लोग सब मिल करके अगर करें। स्वामी जी ने तो कह ही दिया है कि हम सरपरस्ती करेंगे इस काम की, और वो उनके मार्गदर्शन में ही ये काम चले तो बहुत अच्छा होगा। तो बस यही बात है। मैं स्वामी जी का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इंसानियत, मानवता के सबसे नाजुक टाइम में, शायद हिस्ट्री में मानवता के सामने इतना बड़ा चैलेंज कभी नहीं आया होगा जैसा इस वक्त है, स्वामी जी खड़े हुए आगे आए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये वर्ड्स की जरूरत नहीं है स्वामी जी को, और इतने बड़े काम के लिए शुक्रिया अदा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दिल नहीं मानता, इसलिए शुक्रिया छोटी सी चीज है उस एफर्ट के सामने जो स्वामी जी के दिल में है। और कोशिश करते हैं, हम सब के दिल में स्वामी जी के लिए बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, और बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। खत्म करने से पहले एक बात मैं सब लोगों से, आम तौर पर अपने लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि हराम काम मत करो। अपनों को, अपने आप को, अपने चहीतों को, अपने लोगों को, अपने देश वालों को, मानवता को, इंसानियत को खतरे में मत डालो। हर तरह की मुश्किल को बर्दाश्त कर लो इस वक्त। और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं, अगर सरकार ढीला भी कर दे, मैं कहता हूं वो एक वक्त ऐसा आएगा कि सरकार को कुछ ना कुछ ढील देनी पड़ेगी, तब भी आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर इस लॉकडाउन को सख्ती से चालू रखें। सिर्फ जरूरी काम ही करें, बाकी काम को अपने बंद कर दे खुदा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नन्नी जी, आपने बहुत अच्छे से वो किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी बहुत। मद्दी साहब, आपसे निवेदन था कि अभी आप हमारे साथ रहिएगा। 2-3 क्वेश्चंस और भी आए हैं। उसमें एक और चीज थी जो सबसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जैसा कि मद्दी साहब ने कहा भी कि इस समय क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म की तरफ मुड़ते हैं, धर्म स्थलों पे जाने की उनकी इच्छा होती है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब उनको उसकी शक्ति चाहिए होती है। तो आप सबसे एक बार मैसेज, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब आपसे ही शुरू करें कि ये इस समय हम अपने धर्म स्थलों पे ना जा सके, हम कैसे अपने धर्म से जुड़े रह सकते हैं और अपने घरों में रह करके अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक नियम डॉक्टरों ने, सारी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इकट्ठा नहीं होना है। अब जब इकट्ठा नहीं होना, इकट्ठा होने की आप कोशिश करेंगे तो उससे फायदे के बजाय नुकसान होगा। नुकसान होगा तो आप गुनहगार होंगे। आपको गुनाह से बचना ही सबसे ज्यादा जरूरी है मालिक को राजी करने के लिए। Thank you, Maulana Saab, for a very important message. Actually, I'll just request 2 other faith leaders to share on this topic also, कि कैसे लोग अपने घरों में अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं. If I can request Father Paul, if you can share also just in 1 minute, how can people still connect with their Lord even in their homes? Thank you for that question. Maybe I missed it at the beginning. See, one of the means is spiritual means as part of our faith expression, and we believe that, and that is the direction that is given to all our communities of faithful, that our houses are the temples of God. So convert our home as the temple of God. So you can find and you can be in communion with God even at home in prayer, and for which all the churches and our Catholic Church especially has made arrangements to live stream the spiritual practices
for the benefit of our faithful, so that remaining back at home, they can be part of all their spiritual exercises and get connected with the Supreme. Thank you. Thank you. Thank you so much, Father Paul. Sadhvi ji, through this online satsangs that go on and all of the beautiful online offerings, if you can share in a concise manner of how people can stay connected with their God, with their connection to the spirituality wherever they are in their homes at this time. The divine lives within us. God is infinite. It means that God is everywhere. And so whether we are worshiping in a beautiful building that we call a temple or a mosque or a church or a gurdwara, or whether we are worshiping in a small corner of our home that is our home, temple or mosque or gurdwara or church or synagogue, God is there. And so as we know that God lives within us, the ability to stay connected to God is there when we're in our homes just as much as when we walk out of our homes and into a building that is a sacred place. And these days, protecting life is our most sacred duty. And so we must stay home. It is a legal injunction, a national injunction, and a spiritual and religious injunction to stay home in order to protect and preserve life and to connect with the divine within us, whether through our meditation, whether through our prayers, or whether through online programs of satsangs, of lectures, of online religious services, whatever it may be. But we are just as able, and in fact, in some ways even more able, because in that cave of our home, we are required to find that connection within. And so in many cases, it's even more powerful and a wonderful opportunity for us these days to find that connection, strengthen that connection, and really allow it to blossom and flower for us. Absolutely. This 21 days lockdown being a time of reconnecting with our faith, reconnecting with the divine. If Vinod Mishra ji, are you still online? If Vinod Mishra ji from WSSCC is online, we'd love to take you on for the first question that comes in, or the first interaction with the faith panel. Vinod Mishra ji heads the WSSCC India and is a beautiful partner of Global Interfaith Wash Alliance, working for women empowerment in many different aspects of sanitation and hygiene. Vinod Mishra ji. Unmute, if you can unmute yourself. First of all, I would like to convey my gratitude and thanks to the Global Interfaith Wash Alliance for organizing this platform and inviting me to join this conversation and discussion. Everybody knows what to do, what not to do. सबको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है. Washing hand and during lockdown, stay at home, ये सबको मालूम है. जो एक बात मैं सभी जो महानुभाव बैठे हैं, आदरणीय फेथ लीडर्स बैठे हैं, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इस लॉकडाउन के समय में जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बेसिकली एल्डरली, प्रेग्नेंट वीमेन एंड डेली वेज लेबरर्स, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हम सब लोगों का दायित्व है कि हम उनकी सहायता करें और उनकी हेल्प करें. मेरा ये क्वेश्चन होगा पूरे पैनल से कि इस संबंध में, क्योंकि आपकी आवाज में ताकत है, यू हैव लॉट ऑफ फोर्स इन योर वॉइसेस. इफ यू विल गिव मैसेज टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, certainly people will follow
your instructions and direction. तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप सब लोग मिलके सभी लोगों से ये अनुरोध करें कि इस लॉकडाउन के समय में एक तो लोग पूरी तरह इसको फॉलो करें, पूरी तरह घर में रहें। अभी मैं बहुत जगहों पे देख रहा हूं कि वो छुट्टियों की तरह मना रहे हैं। एक्चुअली ये छुट्टी नहीं है, ये एक पूरी ह्यूमैनिटी इस समय खतरे में है। पूरे ह्यूमैनिटी पे दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एवर इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पहली बार इतना बड़ा चैलेंज आया है और एक देश नहीं, 180 देश कंट्रीज आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम। तो हम सबको यूनाइट होकर के इससे लड़ना है और इसको जीतना है, इसको हराना है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो डेली लेबरर्स, वेज लेबरर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो एल्डरली हैं, इनकी सहायता के लिए जरूर आप लोगों की तरफ से अपील होनी चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल समय में सबसे ज्यादा कठिनाई में वही लोग हैं और हम सबको मिलके उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर ये सब हम कर पाएं तो शायद हम बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। नंदिनी जी। बिल्कुल। कैसे हम वल्नरेबल कम्युनिटीज को और कैसे हम इंश्योर करें कि कोई पीछे ना छूट जाए इन एफर्ट्स में, स्पेशली जो हमारे वल्नरेबल कम्युनिटीज है। एक, क्योंकि समय की मर्यादा है, पैनल को क्लोज भी करना होगा। उसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब से, तो मैं संक्षेप में वो कुछ क्वेश्चंस भी अभी शेयर कर दूंगी और क्लोजिंग रिमार्क्स सारे ही धर्मगुरुओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में अगर हो सके तो उन प्रश्नों को भी संक्षेप में आंसर करने का प्रयास करें और अपना आशीर्वचन मार्गदर्शन देते हुए इस पैनल को क्लोज करेंगे। एक क्वेश्चन आया है कासमी जी से कि अनेकों सेवाओं का जो कार्य चल रहे हैं, अलग अलग धर्मों से हमें सुनने का अवसर मिला है, लेकिन ये सेवाएं क्यों नहीं अभी उस तरह से ह्यूमैनिटी को एट लार्ज रीच कर पा रही है? क्यों ये करुणा का संदेश जो अलग अलग संस्थाएं तो कार्य कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो पूरा देश है उसको कैसे ये मैसेज मिल सकता है कि ये करुणा के कार्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके? एक उनका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया है श्रेया का कि लोग घरों पे इतना समय है उनके पास, वो कैसे इसको सदुपयोग करें, कैसे ये, जैसे कि विनोद जी ने भी कहा कि ये समर कैंप नहीं है, ये समर वेकेशन नहीं है, इसका सदुपयोग कैसे करें? और भी क्वेश्चंस आए हैं जिसको हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तो आपके लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर धर्मगुरु इसमें आंसर करते हुए और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अपना आशीर्वचन शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेनरेबल डॉक्टर धामापिया, आपसे शुरू करें as your closing remarks to this panel today. Okay. To have this coronavirus defeated, and this is the main objective that we all have to take collectively, for which during this lockdown period, जितना भी समय हमारे पास है, तो इसमें हाउ टू स्पेंड और यूटिलाइज मीनिंगफुली दिस पीरियड, देखना पड़ेगा हम लोगों का एज ग्रुप और द बैकग्राउंड। कुछ लोग हैं जो डेली लेबरर्स हैं, कुछ लोग हैं जो ओल्ड पीपल हैं, कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर। तो for different kind of different group of age group people, maybe different kind of time utility that can be worked out. For students, maybe this is the time they can stay home and complete their studies, whatever things are there. जो elderly people हैं, I think it is time that we have been traveling always outside. From the time we are born, we keep on traveling outside, inviting lots of stress and strain and many things. And this is a time, I think, the corona has given
a chance to be inside or at home to take a pause, and we travel inside. So this is like traveling inside means be mindful and meditate and read books, whatever is good, that you be at home and generate positive energy with all your family members, and make use of this time. Beautiful. Yeah, so that you can express your solidarity with everyone near your place to help. So you express your karuna for the welfare and benefit and happiness of all. That is the time that we should do now. Thank you. Absolutely. Going within, thank you so much, Venerable Dr. Dhamapiyaji. Going within and connecting with that source of karuna inside. If I can request Father नन्नी जी मुझे ले लीजिए, नन्नी जी मुझे ले लीजिए। मौलाना साहब हम सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मालिक को राजी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मालिक के बंदों के काम आए। घर में बैठकर कोई भी आदमी अगर ये सोच लेता है, एक फैमिली, मैं अपील करता हूं सब लोगों से, हर एक फैमिली 10 फैमिलियों को गोद ले ले। जो नीडी फैमिलीज हैं उनको गोद ले लें। अगर कोई 10 नहीं ले सकता है तो 5 ले ले, 5 नहीं ले सकता 2 ले ले, 2 नहीं ले सकता तो कम से कम एक फैमिली तो हर आदमी ले, चाहे उसे कहीं से उधार लेना पड़े। और ये नियत और ये इरादा हो जाए, क्योंकि देखिए सरकार के भरोसे अगर आप चलाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। सोसाइटी को, हम लोगों को खड़े होना पड़ेगा और मालिक को खुश करने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खुदा के गुस्से को अगर कम करना है तो सदका किया करो। तो मैं सब लोगों से बस यही अपील करता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और पड़ोसियों के काम आए। हर लोग अपनी अपनी पड़ोसी के जिम्मा ले लें बस, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी अपील के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और नन्नी जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना साहब आप डिस्कनेक्ट हो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूज्य स्वामी जी महाराज आप अपने क्लोजिंग थॉट्स और रिमार्क्स दे दे, उसके बाद फिर मौलाना साहब अगर आप तशरीफ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं स्वामी जी को, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकंड, ऑडियो, हिज ऑडियो इज नॉट वर्किंग। मैं रुकूंगा 2-4 मिनट, स्वामी जी को सुन के ही जाऊंगा। आप डॉक्टर पॉल को ले लीजिए प्लीज। Nandini, can I come in? Yes, absolutely. Yeah, thank you. Thank you for this final message. What I feel is that, you see, we are locked down, so we cannot go outside. So if you cannot go outside, go inside. Go within yourself and find the divine presence in you. And that divine presence will really motivate you, inspire you to go outside to the humanity, reaching them out and express our solidarity for those who are in need. And this is being done in different ways, in manifold ways, as all of us expressed here. So let's be united in this response for the sake of the humanity, for the sake of our nation. Thank you. Beautiful. Thank you so much, Father Paul. I'm thinking अगर 2-4 मिनट का समय दिया है मौलाना साहब ने, तो परम पूज्य स्वामी जी आपकी ऑडियो शुरू हो गई है। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं। ओके, वंडरफुल, गुड। मुझे लगता है कि घर में हैं, बात बार बार आ रही है घर में रहें, लेकिन घर में रहकर काफी समस्याएं भी आ रही हैं, ये सुनने को मिल रहा है। लोग आपस में भी तकरार होने लगी है। ये समय तकरार करने का नहीं है, ये समय रिएक्ट करने का नहीं है, ये समय रिफ्लेक्ट करने का है, इंट्रोस्पेक्ट करने का है। रिफ्लेक्शन हो, इंट्रोस्पेक्शन हो। एक बात, लोगों ने क्या किया, अभी शुरू कर दिया है, इंटरनेट पे मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। मुझे तो लगता है भैया ठीक है मूवी देखो,
फिल्में देखो, लेकिन ये टाइम जो है आपको मिला है, ये अपनी फिल्म देखने का टाइम मिला है कि हम अपनी फिल्म कैसे देखें। इंटरनेट पे जाओ, लेकिन इंटरनेट को भी जोड़ो, इंटरनेट और इंटरनेट को जोड़कर आगे बढ़ाओ। तीसरी बात जो बहुत 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 जरूरी है, ये जो लॉकडाउन की बात आ रही है, इसको हम सीरियसली और सिंसियरली लें। और ये टाइम, लॉकडाउन तो बाहर है, लेकिन अपने भीतर के लॉक खोलने का टाइम है। अपने भीतर के ताले बहुत सारे बंद हैं, उन तालों को खोलें, खुद को खोलें, खुलें और खिलें। ये उसके लिए टाइम मिला है। ये अकेलेपन का टाइम नहीं है कि अकेले हो गए। सच मानिए तो इस अकेलेपन को अपनेपन में बदल दीजिए, अपनापन क्रिएट कीजिए, अपने साथ रहिए, अपनों के साथ रहिए। और साथ साथ मैं तो कहता हूँ ये 21 दिन, अभी मौलाना साहब ने कहा कि 21 दिन के बाद, 21 दिन तो सरकार ने दी है, लेकिन अगर 21 दिन के बाद भी हमें बाहर जाने से परहेज करना पड़े तो करना इसलिए जरूरी है ये, क्योंकि अगर हमने ये 21 दिन ठीक ठीक कर लिए लॉकडाउन के, तो पक्का मानिए हमारा देश इन 21 दिनों में, 21 दिनों के कारण पूरे विश्व में 21 हो सकता है। क्योंकि अभी समस्याएं उतनी नहीं है जितनी दिखती हैं, लेकिन आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी धर्म गुरुओं से और हम सब की ओर से ये संदेश है कि भैया अपने दिल को मंदिर बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ, अपने घर को मंदिर और मस्जिद बनाओ और वहां बैठकर पूजा करो। अल्लाह वहां से भी सुनेंगे, परमात्मा वहां से भी सुनेंगे। और जैसी घटनाएं अभी 2-3 दिनों में घटी हैं, अब ऐसी कोई घटना ना घटे, ये हम सारे धर्म गुरु मिलकर जिम्मेदारी लें कि अब इस देश में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटेगी कि किसी मंदिर से कोई घटना घटी या किसी मस्जिद से कोई आवाज आई या किसी गुरुद्वारे या चर्च से आई कि वहां पर लोग इकट्ठे होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ऐसा ना हो। और सबसे बड़ी बात हिंदुओं के लिए ये भी है, हमारे देश में इस समय आज रामनवमी है। जी जी, रामनवमी के दिन कन्या पूजन होता है। मुझे तो लगता है जो भेंट वाली बात मौलाना साहब ने कही, जितना कन्या पूजन पे हम कन्याओं को भेंट देते हैं कन्या पूजन करते समय, लॉकडाउन की वजह से वो कन्या पूजन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सारी की सारी भेंट, जितनी भी कन्याएं, जितनी भी देवियां, शक्तियां आज स्वच्छता कर्मी के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में, सुरक्षा कर्मी के रूप में काम कर रही है, ये सारा पैसा उनको मुझे लगता है गिफ्ट ले और उनको भेजे सरकार के माध्यम से। और जो या प्राइम मिनिस्टर फंड में, इसको केयर फंड में इसको सहयोग दें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम, ये शुरुआत है, इस शुरुआत को जारी रखें और मिलकर काम करें, और मिलकर काम करना ही इसका समाधान है। जी, ये प्रश्न भी आया था कि हम इसको कैसे जारी रख सकते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि धर्मगुरु आकर के अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो धन्यवाद महाराज जी कि आपने कहा कि ये शुरुआत है और ये जारी रहेगा। 2 और अपने धर्मगुरुओं से सुनने के बाद इस पैनल की क्लोजिंग, अगर रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट और अगर मौलाना साहब रुक सके तो बड़ी कृपा होगी। मैं रुकूंगा, चलाइए, रुकूंगा। साध्वी जी आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे संक्षेप में। मुझे लगता है कि अब वैसे all of our scriptures, all of our teachings हमको सिखाते हैं कि हम एक हैं. But coronavirus has absolutely made us realize there is no place that we are separate. That which begins in a meat market in central China, in just a few days is rippling out into every single street, every corner of every city, of every country across the world. And it is time for all of us as faith leaders, as people who belong to faith, as just humans, as part of this humanity, to absolutely commit ourselves to a world in which we stop working just for us, regardless of who us may be. That line between us and them has to be dissolved. There is no longer any them.
There is no longer any others. Everyone is now us, because whatever is happening to anyone is impacting all of us. We are at a time today where we must realize that we cannot be safe. No one can be safe unless everyone is safe. No one can be healthy unless everyone is healthy. And so the renewed call for oneness, for togetherness, for breaking all of the borders and boundaries that we've lived under, and to really emerge from this Corona challenge, from this 21 days together. They say that if you want to start any new habit, any good new habit, you need 21 days to make it really paka. And so our Honorable Prime Minister has given us these 21 days, to keep us alive, to protect us and to protect all of the citizens of this nation. But also it is a time to really create a whole brand new habit of how to live in our lives, in our homes, in our societies, and in our world. So let us take 21-day challenge to stay safe, stay home, stay healthy, and lay a brand new habit of oneness and togetherness and love and health for all of us. Thank you so much, Sadhviji, to emphasize that this time is to lay a new habit, and that habit being of oneness, of togetherness. Dr. Rajwant Singh ji, if you're still with us, if you can share your closing remarks on behalf of Jathedar Sahab, Akal Takht and EcoSikh, we would be graciously honored. And thank you so much for joining us. Well, first of all, I want to thank Swamiji for bringing us all together. Are you able to hear me? Yes. So first of all, I want to thank Swamiji and all the esteemed leaders who have joined in this call. Your role is crucial for the benefit of so many millions. और आपका जो पॉजिटिव रोल है, और स्वामी जी आपकी जो बैकग्राउंड में जो पंछियों की आवाज आ रही है, वो भी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन हो रही है उनकी, क्योंकि उनकी बातें सुन के हमें ये लग रहा है कि हमें उनकी तरह अपने मन में भी एक प्योरिटी ऑफ थॉट हमेशा रखनी जरूरी है. So thank you so much for bringing all the birds in this conversation. Secondly, जो most important जो हम लोगों ने अमेरिका में भी देखा है कि जो मेंटल हेल्थ है, ये जो मानसिक तौर पे हमारा स्वस्थ रहना इस दौरान जो लॉकडाउन है, ये बहुत ही जरूरी है. उसके लिए जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारा धार्मिक क्रियाकर्म है और जो मेडिटेशन की बात की गई है, ये हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है. और फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है. और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो भी टैलेंट है, we all are full of so much talent. We can make use of that and see how that can benefit. हमारा नेबर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका हाल चाल पूछना, खास करके जो बुजुर्ग हैं वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं. So social distancing does not mean social isolation. So we need to connect, and this tools of communication, these phones and all of this can be used properly to really reach out to people who are feeling alone and who are feeling afraid, and a lot of people are very much afraid कि आगे क्या होगा. वो जो आश्वासन देने की जो भावना है, हमने एक दूसरे का हाथ वर्चुअली पकड़ सकते हैं फोन की राहें. और ये जो हम रोल पॉजिटिव है, जैसे एक छोटा सा काम है, अगर हमें पता है कि मेडिकल इक्विपमेंट की कमी है, हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका भी, और मास्क नहीं मिलेंगे और मास्क आने वाले दिनों में उसकी जरूरत और भी होगी. तो जो भी सिलाई जानते हैं, जिनको कुछ आता है, वो ये छोटा छोटा काम हम करना शुरू करें घर में, ताकि जब ये जब भयानक समय आए तो हम अपना पॉजिटिव रोल उस समय करने के लिए हम तैयार हों. सो ये एक लिस्ट हमारी तरफ से
बन जानी चाहिए रिलीजियस लीडर से कि क्या हम लोग अपने घर में बैठे लोग, आम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे ये देश की भी सेवा हो सके, मनुष्यता की सेवा हो सके, और हम अपने नेबर्स को, अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं उनका भी हम टेक केयर कर सकें। ये सब बातें करने के लिए हम सब तैयार रहें। सो यही मेरा सारी सिख कम्युनिटी की तरफ से, अकाल तख्त की तरफ से यही मैसेज है। थैंक यू सो मच सिंह साहब। स्पेशली इस पैनल से जो ऐसी कुछ चीजें निकली हैं जो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जो आपके सुझाव रहे हैं धर्म गुरुओं के माध्यम से इस पैनल, इस चर्चा के द्वारा, उसको भी हम एक लिस्ट करके उसको भी शेयर कर लेंगे प्लेटफॉर्म्स पे भी, और जो जो लोग आज ज्वाइन किए हैं और जो हमारे नेटवर्क्स है उसके माध्यम से भी, ताकि लोग घर बैठ करके ये पॉजिटिव मैसेजेस अप्लाई कर सके। और उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी विनोद मिश्रा जी जस्ट इस पूरे पैनल का क्लोजिंग रिमार्क्स दे और वोट ऑफ थैंक्स दे। जीवा, WSSCC, यूनिसेफ की ये पहल एक अच्छी शुरुआत रहे, ये शुरुआत जारी रहे। विनोद मिश्रा जी। जी, सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, और उनके ही प्रयास से ये हो पा रहा है। साध्वी जी और पूज्य स्वामी जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, और यहाँ जितने भी फेथ लीडर्स, those who participated in this discussion, I would like to convey the heartfelt gratitude and thanks to all faith leaders। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और WSSC की तरफ से, जीवा की तरफ से, और सभी डेवलपमेंट पार्टनर्स की तरफ से। अगर आप लोगों की आवाज में बहुत ताकत है, अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो पूरी दुनिया में और समुदाय में बहुत गहराई से जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैसेज है इसको ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचाएं, और मैं स्वामी जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस समय का उपयोग अगर हम अंदर जाने के लिए करें, बाहर जाने के बजाय, तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। मैं फिर से सभी आदरणीय धर्म गुरुओं का, ऑल फेथ लीडर्स, I would like to convey my thanks and gratitude from WSSC, and thank you very much for Global Interfaith Voice Alliance for organizing this conversation. जी धन्यवाद मिश्रा जी। मैं WSSCC का धन्यवाद दूंगी क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा सहयोगी रहे हैं, सहकारी रहे हैं, और इसी तरह से कैसे ये चर्चाएं जारी रह सकती हैं, ये कार्य जारी रह सकते हैं, और स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस को कैसे ये सेवाएं मिल सकती है। और धर्म गुरुओं के माध्यम से, जैसे जी मिश्रा जी ने कहा कि आपकी आवाज और आपकी प्रेरणा बहुत दूर जाती है, तो हम सभी का रिक्वेस्ट है, यूनिसेफ से भी सभी धर्म गुरुओं के प्रति का ग्रेटिट्यूड आया है। शानी प्रसाद जी का भी मैसेज आया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सारे धर्मगुरु जो हमें आज ज्वाइन किए हैं, और उनकी कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो हमें लगातार लोगों को इस समय देने पड़ेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि समय समय पे हम आपसे निवेदन करेंगे कि वो वीडियो मैसेजेस, छोटे छोटे बाइट्स, वो हम कुछ मैसेजिंग हम आपको दे देंगे, वो मैसेजिंग हम लोगों को लगातार रेगुलरली मिलते रहें। वो हम आपसे इसके बाद भी जुड़े रहेंगे कि वो कैसे हो सकता है। और जैसा कि जामियत उलमा हिंद और मौलाना साहब ने कहा कि जीवा के साथ मिलकर के हम जो हेल्थ वर्कर्स है उनको सेवाएं दे सकते हैं, उनको ये किट्स बना के दे सकते हैं। इस तरह से कैसे और धर्म संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं मिलकर के कार्य कर सकती हैं, इसके लिए भी एक पहल जो मौलाना साहब ने सबको आग्रह किया कि इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके रह सके। और जैसे स्पेन में कार्य हो रहा है, वैसे हेल्थ वर्कर्स को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो दिन रात एक करके अपने आप को लगाए हुए हैं, उनके लिए हम कैसे लग सकते हैं। जो लेबरर्स है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशंस है, जिनको इस समय ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, हम अपने नेबर्स के लिए कैसे सेवाएं कर सकते
अनेकों ऐसी चीजें आई हैं इस पैनल के माध्यम से जो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी हम इसको करते रहेंगे और ये चर्चाएं जारी रखेंगे। जितने भी दर्शक हमारे साथ ज्वाइन किए हैं उन सभी का धन्यवाद और सारे धर्म गुरुओं का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विल क्लोज ऑफ द सेशन with these words and these inspiration. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. महाराज जी संभवतः 1 मिनट समाप्त करना चाहते हैं, तो महाराज जी। कि इतने, जैसा कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी महाराज जी। अच्छा, जैसा कि राजवंशी जी ने अभी बताया कि आज ही के दिन इतने वर्षों तक जो हरमंदिर साहिब में गोल्डन टेम्पल में अपने कीर्तन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मधुरता के माध्यम से सेवा करते रहे, आज उनका भी देह अवसान हुआ और महाराज के चरणों में विलीन हुए। उनके लिए भी हमारे सब धर्म गुरुओं की ओर से प्रार्थना है। और इसलिए ध्यान देना, देखिए कोरोना की वजह से आज उनको जाना पड़ा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मैसेज है आज। कोरोना किसी को छोड़ता नहीं है, कोरोना के लिए सब बराबर हैं। इसलिए घर में रहें और अंतर यात्रा करें, नहीं तो अंतिम यात्रा हो जाएगी। जी बहुत सुंदर। 3 बातें हैं, नहीं अंतर यात्रा करें नहीं तो अंतिम यात्रा हो जाएगी। 3 तरीके हैं अब तो, या तो घर में रहें, या अस्पताल में रहें, या फिर फ्रेम में रहें। फ्रेम का मतलब है भैया फ्रेम ही लगेगी, चिपकेगी। इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए हम अपने सभी धर्मगुरु, सभी अनुयायियों से, पूरे देश से, पूरे विश्व से प्रार्थना करते हैं कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें। ये मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है जी। इसलिए बस इसी के साथ ही हम पुनः आप सब धर्मगुरुओं का पुनः धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अब कोरोना टू करुणा, आगे क्या हो, एक ऐसे कार्यक्रम हो, अब करुणा की ओर लौटे ताकि कोरोना पीछे छूट जाए और करुणा आगे बढ़ जाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद महाराज जी। Thank you for your continuous inspiration, for summing up with such beautiful words. ये हम कैसे संदेश ले जा सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग भी इस पूरे पैनल की हम ऑनलाइन कर देंगे, सबके साथ शेयर हो जाएंगी, इसकी पीसेस भी कट होकर के शेयर हो जाएंगी। और आगे भी यह चर्चा कैसे जारी रहे और हम अपने धर्म गुरुओं से उनका मार्गदर्शन लेते रहे, ये भी प्रयास जीवा, WSSCC, यूनिसेफ के माध्यम से लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है और आप सभी धर्म गुरुओं का हृदय से हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आपने अपना मार्गदर्शन दिया, आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी। और हम आपसे और भी आगे आग्रह करेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। You often speak about the tools that we each have in our toolbox. On your spiritual journey, which of the tools in your toolbox have you found the most helpful and why? One of the concepts that I talk about a lot is how we move through the world with our own toolbox. And that toolbox is how we respond to the world. So let's say that you get yourself into a situation where compassion is required, or resilience is required, or patience is required, or understanding is required. Well, if in your personal toolbox you don't have patience,
you don't have understanding, you don't have compassion, then you're not going to be able to respond to that situation with it. Because usually what happens in our world is people hurt us. Not intentionally, not meaning to hurt us, but they do it because they're not able to respond to that situation skillfully. So let's say that I'm walking through a situation and I see this nail sticking out of the wall. Well, what am I going to do? I'm going to pull a hammer out and hammer it. Or I'm going to call someone and say, get a hammer and hammer that nail back in. But if I open up the toolbox and there is no hammer, and all I've got in my toolbox is a paintbrush or a fork, well, I'm not going to be able to do proper justice to that nail. I'm going to whack it with a paintbrush. I'm going to whack it with a fork. Now, if the nail were a living being, if the nail were one of us, it would feel like, who the hell are you? What are you doing? Don't you understand I'm a nail? What I need is a hammer. Why are you whacking me? Without understanding that, yeah, we'd love to hammer the nail back in, we just don't have a hammer. And this is a metaphor that I use, and it's the foundation for the question of when people hurt us in life. There's so many times in our life when what we need from someone is understanding, or we need patience, or we need compassion. But the people in our lives respond with impatience, or they respond with anger, or they respond without understanding. And then we get hurt. But we blame them for that without understanding that they didn't wake up in the morning planning to hurt us. They didn't wake up in the morning planning to make a mess of that situation. They're just moving through the world with a toolbox. And when the situation required love or generosity or openness or understanding, they opened up their toolbox and they didn't have any. What they had was fear, anger, loneliness, unfulfilled expectation, grudges. And so that's all they have to respond to the world with. And our toolbox gets created throughout our lives. It begins in our childhood. Our parents give us the first tools. So if we're raised with patience, we're raised with understanding, we're raised with generosity, we develop tools of patience and generosity. But if we're raised with impatience, we're raised in the every man for himself model of life, we're raised with abuse, then we don't end up with tools of love and generosity in our toolbox, and we don't have them then to respond to others with. So that's the foundation of this question, which was, on your spiritual journey, which of the tools in your toolbox have you found most helpful and why? On a personal level, for me, I think the tool that was most beneficial for me, and has been for most of my life, has been the knowledge, the deep, deep, deep awareness that I deserve, I'm entitled to. Last night we spoke about privilege, how life is a privilege. I was really raised with the belief, the knowledge, that I was entitled to a happy life, a good life, good things in life. It's the way my parents raised me. You can do anything, be anyone, have anything, achieve anything. I was raised to believe the world is good. When I was very, very young, my mom used to take me to this place
near our house that had this huge slide. Enormous, enormous slide, but she, of course, was too scared to go down it with me. And so she'd grab any random guy going up the stairs and she'd say, would you take my daughter down the slide? I was maybe 3, 4, 5 at the time. Now, today, people would look at you like you're crazy. People would, try to get you arrested for child endangerment, to just hand off your toddler girl into the hands of some unknown male stranger. But my mom had this, still has this very deep, deep belief in the goodness of people. And so it never occurred to her that anything would happen to me. She used to teach me, strangers are just friends we haven't met yet. That was the motto that I was raised with. And so that combined a faith in people around, in the goodness of people, and faith in the universe, that the universe was good, that you were entitled to good things, that there always would be enough. I was not raised with fear. I was raised with a sense of plenty. And what that did for me in my life was enabled me on my spiritual journey, because that's what the question asks, is on your journey, which of the tools? Well, if I didn't have faith in the universe, if I didn't have faith in the goodness of the universe, the rightness of the universe, I think it would have been very difficult at 25 to leave the world that I came from, to leave a path that I knew was going to take me into financial success, career success, for a spiritual life. To walk out of a world in which everything is set for you on a physical, tangible level, and to walk into a place where you don't speak the language, you don't know anybody, you don't know anything about the culture. You have no idea what tomorrow is going to bring. You have no idea how long they're going to let you stay here. When I first moved here, Parmarth had a 15-day maximum policy. Right? I mean, we still do on paper. You've 15-day maximum. You've actually still got to get special permission. It's granted if you're a sincere sadhak, but you've got to get special permission to stay more than 15 days. So if I had been raised with fear, what's going to happen to me? Where's my next meal going to come from? Who's going to put the roof over my head? What's going to happen? It would have been very difficult to take that step in faith with what I had experienced, and to have faith in the people, to have faith in the world, to have all of that faith. So I think that was probably the most beneficial tool. The other one, though, that I would mention is a deep commitment to truth. In my home growing up, telling a lie was the absolute worst sin you could commit. You could have done something horrible, but if you admitted it, the punishment would be almost nothing. And on the flip side, you could have done almost nothing, but if you lied about it, there was hell to pay in my house. You didn't lie. And you didn't lie even about little things. There was no such thing as a white lie in my house. And so I was really raised with this truth at all costs belief. I remember actually my last year in high school. I was 17 and I had fallen in love. First love. To me, we were soulmates, and we were going to be together forever. It was just, you know what first love is like when you're a teenager. But he was a year older than I was.
and he was going off to college the next year. And I remember having dinner with my dad, and he said to me, so Eric's going off to college next year. What are the two of you going to do? And I said, oh, well, you know, we're going to stay together, of course, because we're soulmates. I mean, of course we have to be together. We're soulmates. I said, but we're going to have an open relationship. And my dad, now I have to back up for a moment. My dad is a divorce attorney, a very successful divorce attorney. The man spends all day long, morning till evening, divorcing people. And he's done that for decades and decades and decades. And so all he hears all day long are the fights of husbands and wives who are getting divorced. Okay, so he's now sitting at the table with his 17-year-old daughter who's telling him that we're going to stay together because we're soulmates, but we're going to have an open relationship. And my dad says to me, what does that mean? And I said, well, Dad, you know, in that voice, like, you know, what century were you born in? I said, it means we will be free to date other people because he's going to be far away. We'll be free to date other people, but we will be totally honest about it. We're going to tell each other everything. And we're going to stay together, of course, because we are soulmates. So my dad, in really what now, 30 years later, I still think he deserves an award for how to parent a teenager, says to me, he says, so let me get this straight. He says, you're going to date other people, tell each other about it, and then stay together. And I said, well, yes, of course. And he says, not, what are you, an idiot? Not, I've spent my life getting couples divorced. This is the stuff divorces are made of. He looks at me and he says, well, that sounds very interesting. I look forward to hearing how that works out for you. And I share that story, not just to highlight how wonderful my dad was, but because this is the commitment to truth that I was raised with, of truth will supersede everything. Yes, we have to date other people because we are far away. Yes, we will stay together because we are soulmates. And of course we will tell each other about it, because I could not imagine in my life there being any reason, any acceptable situation in which the truth would not be the right thing to do.